हाय गाइस आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। मेरी आज की ये वीडियो है फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो गाइस जो टॉपिक फ़िज़िक्स का मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ वो साउंड से रिलेटेड है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या फिर इको ऑफ साउंड हम इसे कह सकते हैं। तो गाइस फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके लिए गूगल पर चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर फाइंड कर लेते, इसको सर्च कर लेते हैं ताकि हम इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन ले सकें। तो हम इसे यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास इसके रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। हम इसका फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। Bouncing back of sound waves after striking from the hard surface is called reflection of sound, or we can say that sound traveling in a given medium after striking the surface of another medium returns in the same medium, which is called reflection of sound. What is an example of reflection of sound? Example of reflection of sound is the bouncing back of a sound wave when it strikes a surface such as a wall, metal, sheet, plywood, or other object is referred to as sound wave reflection when the distance between the source and the reflected sound is less than 17 meters. Reverberation occurs. What is the reflection of sound and its uses? अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है और इसके यूजेस क्या हैं ये भी हम जान लेते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज़ यूज टू मेजर द स्पीड एंड डिस्टेंस ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। दिस मेथड इज कॉल्ड सोनार। Working of a stethoscope, the sound of patient's heartbeat reaches the doctor's ear through multiple reflections of sound. How do you see reflection in sound? What is reflection of sound called? Echo is a reflection of sound that arrives at the listener with a delay after the direct sound. Moreover, the delay is proportional to the distance of the reflecting surface from the source and the listener. What is law of reflection of sound? The law of reflection of sound waves states that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, but unlike reflection of light on a highly smooth surface, in the reflection of the sound wave, a part of the incident wave gets transmitted to the medium where it hits. What are two practical examples of reflection of sound? Applications of reflection of sound waves is that the distance and speed of underwater objects are measured using sound reflection. Sonar is the name for this technique. A stethoscope's operation is likewise based on sound reflection. What are the two laws of reflection of sound? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के टू लॉज कौन से हैं ये भी हम जान लेते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर obeyed during reflection of sound. The incident sound wave, the reflected sound wave, and normal at the point of incidence lie in the same plane. Angle of reflection of sound is always equal to the angle of incidence of sound. What is difference between reflection and refraction of sound? The difference between the refraction and reflection of sound is that reflection occurs when sound waves bounce off something, and refraction occurs when sound waves travel from one medium into another and change speed. What type of form is sound? In physics, sound is produced in the form of a pressure wave
When an object vibrates, it causes the surrounding air molecules to vibrate, initiating a chain reaction of sound wave vibrations throughout the medium. सो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुई होगी। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।